and the name of unit is nuclear physics. Nuclear physics. We know that firstly we will discuss what is एटम. हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग में ऐसे कई सारे मटेरियल्स होते हैं. हमारे सराउंडिंग में कितने सारे मटेरियल्स होते हैं. In our surrounding there are numbers of materials, like let us consider NaCl or calcium carbonate or any other material. तो दिस इज कॉल्ड, जैसे हमारा घर में यूज़ होने वाला नमक जो होता है उसे हम NaCl बोलते हैं. तो जो मटेरियल्स है, दिस इज अ मटेरियल. तो देयर आर नंबर्स ऑफ मटेरियल इन द नेचर. तो दिस materials is made up of, here you can see this is a material NaCl, and NaCl is made up of atom Na plus Cl. Na plus Cl, this is a material, this is a material, and these are the atoms which made this material NaCl. Okay, तो एटम होते हैं, दिस इज कॉल्ड सोडियम एटम एंड दिस इज अ क्लोरीन एटम. तो हमें पता है कि एटम के अंदर भी कुछ होता है. तो एटम के अंदर क्या होता है? मैसिव न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स. मैसिव न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स. इनसाइड द एटम देयर एग्जिस्ट न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स. तो हमें पता है कि उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, कितने न्यूक्लियस, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है. तो हमने ये देखा है. तो जो ब्रिटिश फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, ब्रिटिश फिजिसिस्ट जो है अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर मॉडल दिया 1911 में. रुदरफोर्ड रुदरफोर्ड ने 1911 में एटॉमिक मॉडल दिया. उन्होंने क्या किया, 1911 में एटॉमिक मॉडल दिया. और दिस एटॉमिक मॉडल में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स which were directed at a thin gold foil. In 1911 अर्नेस्ट रुदरफोर्ड उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच वेयर डायरेक्टेड एट अ थीन गोल्ड फॉइल. तो उन्होंने क्या किया, थीन गोल्ड फॉइल पे उन्होंने क्या स्कैटर किया, दिखा उन्होंने कि द लार्ज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स toward the thin gold film, and he postulated that all positive charges of an atom were concentrated in the central massive core and named it as a nucleus. तो उन्होंने ऐसा फिर प्रेडिक्ट किया कि जो भी टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, पूरे एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, एट द सेंटर. वो पे कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, एट द सेंटर. तो रुदरफोर्ड ने क्या किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स वहाँ पे से स्कैटरिंग हो रहे थे. तो स्कैटरिंग होने की वजह से उन्होंने एक प्रेडिक्ट किया कि देयर विल बी द पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ द एटम, एंड दिस मैसिव कोर ऑफ इज नेम्ड एज अ न्यूक्लियस. तो जो न्यूक्लियस की जो टर्म है, जो न्यूक्लियस की क्या है, जो टर्म है, वो न्यूक्लियस की टर्म उन्होंने अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने कॉइन की. और उन्हें बताया कि देयर इज़ अ मैसिव पॉजिटिव चार्ज, देयर एग्जिस्ट अ मैसिव पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस. दिस मीन्स दैट न्यूक्लियस हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज. तो न्यूक्लियस में चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. देयरफॉर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हमें देखा कि जो भी मटेरियल है वो मटेरियल मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल. दिस इज जस्ट वी कैन से
दिस इज़ अ मटेरियल ऑफ सॉल्ट, दिस इज कंसिडर सॉल्ट। तो सॉल्ट के जो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्ट्स के मॉलिक्यूल्स बने होते हैं और मॉलिक्यूल्स एटम से बने होते हैं, और एटम्स जो बने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं और न्यूक्लियस से बने होते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है, तो ये रुदरफोर्ड ने बताया कि द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ न्यूक्लियस एंड दिस मॉसिव पॉजिटिव सेंटर इज सेड टू बी द न्यूक्लियस, इज सेड टू बी द न्यूक्लियस। तो हमें यहाँ तक के पता चला कि व्हाट इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस किसी ने कॉइन किया, किसने हमें न्यूक्लियस की टर्मिनोलॉजी बताई। ओके तो हमें देखना है कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट वी विल डिस्कस dimensions of न्यूक्लियस। यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो हमें पहले देखेंगे हम व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इन द अराउंड ऑफ 10 to the power -14 मीटर, -14 मीटर, एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अराउंड, एंड व्हाइल द एटम, जो एटम की रेडियस होती है, तो एटम की रेडियस कितनी होती है, एटम, द रेडियस ऑफ एटम is equals to 10 to the power -10 meter, that is it is around a femtometer and it is around a angstrom. Femtom is 10 to the power -15 meter, around near about 15 meter, and it is 10 to the power -10 meter. This is the radius of nucleus, and this is this gives us the size of the nucleus. This gives us the size of the nucleus. Okay, next we will represent or we will discuss हमें देखना है कि किसी एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एटम यहाँ पे हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे जेड होता है और यहाँ पे ए होता है। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ एनी एटम, दिस इज अ सिंबल ऑफ एटम, एक्स इज अ सिंबल ऑफ एटम, ए इज द mass number, A is the mass number, and Z is the atomic number. It is the atomic number. Sometimes this atomic number is equals to the numbers of protons existed in the nucleus. Existed in the nucleus. Also here we can say here A is given by the P plus N. What is N? N is the number of neutrons. N is the number of neutrons. Therefore again we will discuss the presentation of atom. Atom is presented with the help of the symbol X. X is the symbol of the atom, and A is the mass number, Z is the atomic number, and here is again symbol of atom. This is symbol of atom, is the mass number, and Z is the atomic number. We will take another example of this atom. Let us suppose here calcium. Calcium is this is a calcium, symbol of calcium atom, having 20 is the its atomic number and 40 is the mass number. तो यहाँ पे हम let us A equals to
40, A equals to 40 and Z equals to 20. Therefore, P equals to what? N equals to what? P means number of protons, N means number of neutrons. तो हमें यहाँ पे पता है कि in case of any atom, in case of any atom, Z, that is Z is the atomic number. Z is the atomic number, and we know that Z, or this Z, here we will consider this Z. Here Z nothing but the atomic number, and always Z equals to the number of protons in the atom. Therefore, as Z is here 20, this implies P will be also equals to 20. The number of protons will be equals to, this is the number of protons. This will be the number of protons. Therefore, in case of the calcium, there are 20 numbers of protons. Now, to find number of neutrons. Number of neutrons, here we have A equals to 40. A कितना है? 40. Therefore, A is the sum of N plus P. And here there is A is 40 and N we have to calculate, and P is the value of 20. This implies N equals to 40. N equals to 40. This means in case of calcium, number of protons are 20, numbers of neutrons are 20. This is a simple calculation. Therefore, here you are well aware that, तो यहाँ पे कैल्शियम और 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो 20 एटॉमिक नंबर होने की वजह से उसके प्रोटॉन्स कितने हैं? 20 है, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर इज 40, तो 40 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 40 में जैसे एटॉमिक नंबर इज 40, तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स. The sum of the numbers of neutrons and protons equals to atomic number. Here this is a mass number A, तो मास नंबर है 40, तो 40 में से हमने 20 माइनस किया तो हमें मिला 40. 40 is the numbers of neutrons. Therefore, in case of calcium there are 20 protons and 20 neutrons. तो चलो मैं आपके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ. सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे, तो कैलकुलेट द example, calculate numbers of protons and neutrons in C612. सॉल्यूशन. ओके, चलो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने प्रोटॉन्स है इसमें और कितने न्यूट्रॉन्स हैं. तो यहाँ पे X इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एटम, एंड हेयर दिस इज अ Z एंड दिस इज अ हेयर. यहाँ पे A दिया है, ये है 12. देयरफॉर दिस एटम विल बी C6 and 12. We know that Z equals to, by observing this, Z equals to 6, and here Z is the number of protons. As A equals to
12. This implies A equals to n plus P. So n here this is 12 and n plus 6 implies n equals to 6. This implies this atom consists of n equals to 6 and P equals to 6. Now we will discuss size of the nucleus. Size of the nucleus. तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस फर्स्टली प्रेडिक्टेड बाय द रुदरफोर्ड. जो रुदरफोर्ड है, जो रुदरफोर्ड ने क्या किया कि द जो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेडिक्टेड फर्स्ट टाइम इन अ रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. Rutherford scattering तो Rutherford scattering experiment provided first estimate of nuclear size. तो उन्होंने क्या किया, एक दिया एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई मीन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंटेन्स इनसाइड द एटम एंड विच इज इक्वल्स टू द मास नंबर. देयरफॉर V प्रोपोर्शनल टू A. तो उन्होंने क्या किया, द वॉल्यूम ऑफ हेयर द वॉल्यूम, दिस इज V इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is proportional to A is the number of nuclei. Number of nuclei or number of nucleons, that is mass number A equals to n plus P existed inside the nucleus. This implies V proportional to A. We can say here V equals to any constant K into A, or which implies as V divided by A equals to K. This means the ratio of volume of nucleus to the number of nuclei existing in the nucleus is a constant. Therefore we know that the volume of nucleus, or generally the volume of nucleus or size of nucleus is like a spherical.
this theory gives us this explanation that the volume of nucleus is a spherical in shape. Therefore, the V volume equals to 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. This is the volume of a sphere. Volume of a sphere. This will be proportional to, therefore 4 by 3 pi r cube proportional to area. Proportional to area. 4 by 3 proportional to area. Again we can say here 4 is constant, 3 is constant, pi is constant. Therefore we can say, we can take here also. यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 4 by 3 pi r cube, 4 by 3 pi r cube proportional to a. nothing, a is not a area, a is the number of nuclei or mass number. तो यहाँ पे again 4 by 3 pi are the constant quantity. Constant. This is again a constant. This implies only r is variable. Therefore, r is proportional to a. R proportional to a, which again can be written as r proportional to a to the power 1 by 3. A to the power 1 by 3. Further solving, r equals to r0 a to the power 1 by 3. A to the power 1 by 3. Here r is a constant value. R is a particular, here r0 is a particular constant value, and which will be equals to 1 by 2, 1.2 here this will be equals to 1.2 into 10 to the power minus 15 meter. Minus 15 meter. Okay. Therefore, by using this formula, r equals to 1.2 into 10 to the power minus 15 into a to the power 1 by 3. We can calculate the value of any atom by putting the value of A, just like we have calculated C equals to 20 and 40 here. So here value of A will be value of A will be 40. Okay, the value of A will be 40. By putting the value of 40 here and multiplying this, we can calculate the radius of calcium. We can calculate the radius of calcium, right? This is the theory which gives us the size of the nucleus. We will again repeat this one. The size of the nucleus is given by the Rutherford scattering experiment. In that particular scattering experiment, it is stated that the volume of a nucleus is proportional to the number of nuclei present inside the nucleus. Nothing but the number of nuclei exists in the nucleus is predicted or calculated with the help of atomic number. Atomic number nothing but the number of neutrons and number of protons present in the nucleus. Therefore, V proportional to A. Therefore, we can say V equals to K into A, where K is the constant. This K is the constant. K is the constant. तो यहाँ पे क्या है? K is the constant. Therefore, V by A is a constant. Also, theory predicted that, or theory gives us that the shape of the nucleus is a spherical. As the shape of the nucleus is a spherical, this means that V equals to 4 by 3 pi. Volume of the nucleus will be 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. Therefore, 4 by 3 pi r cube proportional to A. Proportional to A. तो यहाँ पे हमने लिया
here 4/3 pi r cube proportional to a. तो यहाँ पे अगेन हमने देखा कि 4/3 pi is also constant, 4/3 pi is also constant, therefore only remaining there r cube proportional to a, r cube proportional to a. This implies r proportional to a to the power 1/3, taking the, यहाँ पे हम लिख सकते हैं taking the cube root on बोथ साइड. तो हमने क्या किया, बोथ साइड में हमने क्या किया, क्यूब रूट लिया. यहाँ पे हमने बोथ साइड में क्यूब रूट लिया, तो r proportional to a to the power 1/3. This implies here, but again we have to take constant here in order to equate this equation. Therefore r equals to r0 a to the power 1/3, and by multiple calculations the theory uses the value of r0, and r0 the value is a 1.2 10 to the power minus 15 meter, 1.2 minus 15 meter here. Therefore by using this equation we can calculate the radius. This is the radius of any atom, radius of any atom.